started in the previous class. So first of all, it is present around the eye, heart, kidney, below the skin, and act as a shock absorber and act as a heat insulator to prevent the heat loss. It is also present in blubber of whale and elephant. Hump of camel. Fat body of frog. Thick tail of marino ship. Thick tail of marino ship. आप लोग शायद 12th में रिसर्च डाले पढ़े थे that is a cross breed which is developed in the Punjab, cross between Canary fish and merino variety of male of ship. ये जो merino ram है, merino ship है, उसका thick tail में भी adipose tissue होता है. Mainly it is concerned with what? Mainly it is what? Not concerned with the storage of fat. Mainly it is concerned with the storage of fat, and इसी fat के वजह से ही ये आई, हार्ट, किडनी को प्रोटेक्शन देता है. स्किन के नीचे प्रेजेंट है तो ये आपका हीट इंसुलेटर का काम करेगा. सो अल्टीमेटली डुअल फंक्शन, शॉक एब्जॉर्बर एंड एक्ट एज हीट इंसुलेटर टू प्रिवेंट द हीट लॉस. नाउ वी आर कमिंग टू द डायग्राम ऑफ दिस. So a diagram of this. एक को एम्प्टी रखना, बाकी सबको ऐसे फैट फिल्ड कर सकते हो. This is actually the structure of the adipose tissue. As you can see, a specialized type of fat storing cells are there called as what? These cells का नाम क्या है? Adipocytes. Adipocyte cells are derived from? Adipocyte cells are derived from? नहीं जानते. Lipoblast. किससे बनता है? देखो ये जनरल कंसेप्ट है, इसको लाइफ टाइम में याद रखिए, बहुत ही सिंपल है. ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग सेल. ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग सेल. साइट मतलब सेल. ठीक है. क्लास्ट मतलब
ईटर फैगोसाइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंड्रोब्लास्ट, कंड्रोसाइट, कंड्रोक्लास्ट, मतलब क्या है? कैटिलेज सेल हो गया कंड्रोसाइट, कैटिलेज फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? यहाँ पे ट्विस्ट है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्चुअली कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स इज कॉल्ड एज व्हाट ना? कंड्रोसाइट। मतलब कार्टिलेज को कौन सेल फॉर्म कर रहा है भाई? कंड्रोसाइट। एंड कंड्रोसाइट को कौन फॉर्म कर रहा है? कंड्रोब्लास्ट। It is a cartilage cell forming cell is called as what? Chondroblast. And which is called as cartilage eater. Means जो phagocyte करेगा, chondroclast. वैसे ही यहाँ पे lipoblast gives rise to adipocyte cell. वैसे बोन में क्या आ जाएगा? Osteoblast, osteocyte, osteoclast. हर जगह। एरिथ्रोसाइट में भी क्या होगा? एरिथ्रोब्लास्ट। ब्लास्ट आ जाएगा मतलब फॉर्मिंग सेल्स। This is actually mononuclear fat cell or adipocyte. This is polylocular adipocyte. What is the difference between the monolocular and polylocular? Monolocular में single fat drop होगा, large और small. Obviously single है तो large होगा. And polylocular में many fat droplet की drop. Droplets. ये है difference. Polylocular में many fat droplets and monolocular में single fat drop. This is actually empty fat cell. This empty fat cell is looks like what? Just a ring. जैसे मैंने यहाँ पे रिंग पहना, रिंग में एक छोटा सा स्टोन है ना, तो उसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग। क्या बोलते हैं उसको? सिग्नेट रिंग। तो ये एम्प्टी फैट सेल आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि नहीं? Why is it so? Because this is what? न्यूक्लियस। ये क्या है? मैंने क्या बोला है? ट्रेन को तो पकड़ के ला नहीं सकते, बस को पकड़ के ला सकते। नहीं सर, मैं ट्रेन से आया, बस आया नहीं था, जाम में था। तो दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पे सेंट्रिक है कि पेरिफेरल है? पेरिफेरल। अब दोनों में थोड़ा सा आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं और ज्यादा लेबलिंग करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोलाजन फाइबर एंड येलो फाइबर आप आराम से देख सकते हैं। बंडल में जो है वो कोलाजन फाइबर है, जो ब्रांच्ड सिंगल है दैट इज व्हाट ना? येलो फाइबर। एंड द ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट ना? मैट्रिक्स। बात ये है कि मोनोलोक्यूलर फैट सेल एंड पॉलीलोक्यूलर फैट सेल में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म मोर प्रेजेंट आइदर इन द मोनोलोक्यूलर और इन द पॉलीलोक्यूलर? किसमें ज्यादा है? पॉलीलोक्यूलर में ज्यादा है। रहेगी नहीं, क्योंकि स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स है, तो लार्ज नंबर ऑफ व्हाट ना? क्वांटिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, दैट इज thin peripheral cytoplasm present in the monolocular, and cytoplasm जिसमें ज्यादा होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्वांटिटी ज्यादा होगा, एंड माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है हीट। which fat release more heat? polylocular fat cell content of fat, ठीक है। एंड मोनोलोक्यूलर में क्या होगा ना? कम होगा। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, जस्ट वेट। कंप्लीट है क्या? एडिपोसाइट derived from lipoblast।
Adipocyte derived from lymphoblast. And adipose tissue act as endocrine. ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है ना, लेप्टिन. ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है कि which connective tissue also act as endocrine. Adipose tissue that secrete a hormone called as leptin. And leptin actually क्या है ना, satiety hormone. Satiety hormone means what ना, feeling of satisfaction. इसका ऑपोजिट हो जाएगा हंगर हार्मोन. हंगर हार्मोन जो है वो ग्रेलिन है. ग्रेलिन हो जाएगा हंगर हार्मोन एंड लेप्टिन हो जाएगा satiety hormone, that is feeling of satisfaction secreted by the adipose tissue. That's it. थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, थोड़ा थोड़ा आइडिया. लेकिन हम लोग जैसे ही एनसीईआरटी, मैंने आपको बोला है कि वी विल डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं एनसीईआरटी का लाइन आपके साथ डिस्कशन करूंगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो कंटिन्यू करें. नेक्स्ट पेज. Now we are coming to the white adipose tissue and brown adipose tissue. White adipose tissue and brown adipose tissue. And it is formed of mononuclear fat cell. And it is formed of polynuclear fat cell. White in color. This is brown due to presence of cytochrome pigment. एंड आप लोग पढ़े हो साइटोक्रोम क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है कि नहीं. So cytochrome pigment, it is iron containing pigment, that's the color is brown. Less cytoplasm, less number of mitochondria. Here it is more and here it is more. That will generate less heat ki more heat. क्या होगा यहाँ पे? Less heat. So that will generate the less heat and here it is more heat. Present in adult and it is present in newborn baby hibernating mammals. इनमें कॉमन क्या है? न्यूबॉर्न बेबी एक्चुअली दे नीड टू कंजर्व द हीट. अरे ये सुनो, बॉडी से अगर हीट लॉस हो जाएगा तो हाइपोथर्मिया हो सकता है. हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉडी का डेथ हो जाता है. न्यूबॉर्न बेबी बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं बिकॉज जब ये मदर के यूटेरस के अंदर प्रेजेंट है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या है मदर का, 37 to 38 डिग्री, राइट. तो गर्म
कंडीशंस में वो प्रेजेंट है सिंस फ्रॉम द दैट इज जेस्टेशन पीरियड थ्रू द प्रेगनेंसी। सडनली जब वो बाहर आते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे डिस्टर्ब रहता है आउटसाइड, इसलिए बहुत जोर से वो चिल्लाते हैं, रोते हैं जैसे जन्म होते हैं, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। एंड बॉडी का टेम्परेचर बॉडी से लॉस हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल इश्यू है इन केस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, एंड दैट इज व्हाई दे कंटेन्स व्हाट द ब्राउन फैट। न्यूबॉर्न बेबी में ब्राउन फैट होने से फायदा क्या होता है, हीट लॉस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज इट इज जनरेटिंग मोर हीट। इसीलिए छोटे बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को आप अगर पूरा एकदम चिल्ड कंडीशन में भी रख देंगे, खुला पूरा बेयर बॉडी, उनको सिवरिंग नहीं होगा, दे विल नॉट सिवर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिवर करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ब्राउन फैट they do not shiver in spite of the low temperature outside. समझ में आ रहा है कि नहीं? And same condition applicable to what ना, hibernating mammals also. Hibernating mammals, the mammals which will hibernate during the winter. It can be substituted as a food. White adipose tissue can substitute as food. It can. तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला, actually newborn baby do not shiver. In spite of low temperature outside. It is only because of what? Brown adipose tissue. तो ये हो गया आपका एडिपोज टिश्यू। के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं डेंस। एज पर द क्लासिफिकेशन क्या था, लूज कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू व्हाट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। Cells and fibers are compactly arranged. कंपैक्ट टाइट अरेंजमेंट है। अगर टाइट अरेंजमेंट है तो मैट्रिक्स लो होगा, लेस होगा कि मोर होगा, so that is why less matrix in comparison to the loose. डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो चीज आता है, डेंस रेगुलर एंड सेकंड इज डेंस इरेगुलर। ठीक है, मैं पहले डेंस रेगुलर के बारे में डिस्कशन करता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेगुलर का मतलब क्या है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स एंड फाइबर्स आर बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। दैट इज व्हाट ना, ओरिएंटेशन ऑफ arrangement of cells and fibers are regular. The orientation of the arrangement of the cells and fibers are very systematic, regular, so called as dense regular connective tissue. तो इसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था दो टाइप का डेंस रेगुलर होता है। वन इज व्हाट, वेरी गुड, व्हाइट फाइब्रस, सेकंड इज येलो वेस्ट। क्लियर का डिफरेंस है। व्हाइट फाइब्रस में क्या होगा ना, मोर व्हाइट फाइबर, लेस व्हाट, येलो फाइबर।
किसी किसी बुक्स में आपको मिलेगा कि यहाँ पे ओनली व्हाइट फाइबर होता है, येलो फाइबर एब्सेंट है। दिस इज रॉन्ग। हम लोग किसी दूसरे बुक को कभी छुएंगे भी नहीं, याद रखिएगा। हम लोग को दूसरे बुक्स में बहुत अलग अलग कंसेप्ट मिलेगा जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो स्टिक टू द एनसीईआरटी कंसेप्ट ऑनली। जो वहां पे लिखा हुआ है उसी चीज को हम लोग एलाबोरेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ताकि आप लोग का फ्लक्चुएशन ना हो, दिमाग थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर ना भटके। सो मोर व्हाइट फाइबर एंड लेस येलो फाइबर, हियर इट इज more yellow fiber, less white fiber. इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा व्हाइट फाइबर? इनइलास्टिक होगा कि नहीं? मतलब स्ट्रॉन्ग हो, टफ हो सकता है। दिस इज इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। क्या एग्जांपल देंगे यहाँ पे व्हाइट फाइबर्स का? टेंडन दे सकते हैं एंड शिट। येलो इलास्टिक में एग्जांपल देंगे कौन सा? लिगामेंट। तो लिगामेंट पूछेगा कि लिगामेंट कंटेन्स व्हाइट फाइबर, ट्रू स्टेटमेंट की फॉल्स स्टेटमेंट? इसी वजह से आप लोग गलत करके आते हो एग्जाम। मैंने सिंपल पूछा कि लिगामेंट में व्हाइट फाइबर प्रेजेंट है कि नहीं। मैंने लेस और मोर का वर्ड ही नहीं उठाया। मैंने बोला ना आप लोग एक्स्ट्रा थोड़ा दिमाग यूज कर लेते हैं। सिंपल पूछ रहे हैं, सिंपल सोचो। है यस है, कम है कि ज्यादा वो अलग बात है भाई। टेंडन किसको कनेक्ट करता है? बोन टू मसल्स। लिगामेंट अब टेंडन याद रखिए, टेंडन क्या है ना, पुअरली वैस्कुलर means blood supply to the tendon is highly rich or low, poorly supplied, that is what is poorly vascular. It is vascular, आप इसको avascular नहीं बोलेंगे, it is vascular but it is very poorly vascular. कैटिलेज क्या है? कैटिलेज वैस्कुलर है कि एवास्कुलर है? कार्टिलेज वो अक्सर यार, हाँ कैटिलेज। कैटिलेज क्या होगा ना, एवास्कुलर विदाउट ब्लड सप्लाई। बोन क्या है ना, वैस्कुलर। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एवास्कुलर। समझ में आ रहा है? नर्वस टिश्यू क्या है, वैस्कुलर है कि वैस्कुलर है, एवास्कुलर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, which of the following cells forms tissue without any layer? Which of the following cells forms the tissue without forming layer? बताइए। सभी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? यस हो सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू कभी लेयर बनाता है? ये चीज दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, मस्कुलर टिश्यू बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। नर्वस टिश्यू कभी सुने हो कि लेयर बनाता है? बट दे आर फॉर्मिंग द टिश्यू। सिंपल सिंपल क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा सोचते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे सर। डिफिकल्ट बुक है, देखिए सर इतना बढ़िया बुक है, मस्त बुक है, इसका रेटिंग देखिए ना, मस्त रेटिंग। क्या करेंगे, आचार करेंगे उसका। कम्स टू द सिथ। शीथ एक्चुअली क्या है, इट इज कवरिंग है, कवरिंग अराउंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं शीथ का, जैसे कि पेरिकंड्रियम। पेरिकंड्रियम इज द सिथ अराउंड व्हाट ना, cartilage. Periosteum,
It is the sheath around what? Na bone. Fascia present around the muscles and kidney. Renal fascia. पढ़े हो? Muscles fascia. Present around the eye called as sclera. Present around the heart called as what? Pericardium. Present around the lungs. Pleura. Present around the testes and ovary. ये सब तो नॉर्मल वर्ड आप लोग जानते हैं. तो आपको बस पूछेगा कि which of the following or how many of the following are belongs to the white fibrous dense regular connective tissue. तो आंसर क्या होगा भाई? ये सारे के सारे. Because all these are what? Na sheath. And sheath is which type of connective tissue? White fibrous dense regular. तो आपको अगर पूछता है कि heart is made up of which of the following type of connective tissue? ऑप्शन में दिया है epithelial, connective, muscular, all of these. Every organ of your body, every, is formed of all the 4 different type of tissue. Nervous tissue, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue. सब organ में सारे के सारे tissue present है. हार्ट की बात कर लेते हैं भाई. हार्ट हम लोग क्लियरली पढ़े हैं. पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम पढ़े हैं ना. तो एंडोकार्डियम is made up of what? Endocardium is made up of what? Na epithelial tissue. Myocardium is made up of what? Na cardiac muscles. Pericardium is made up of what? Connective tissue. And nerves तो सप्लाई हुआ ही. बहुत जेन्युइन चीज आता है क्वेश्चन में, इसलिए सोच बदलो, देश जरूर बदलेगा. अरे देश तुम ही लोग बदलने वाले हो आगे चल. बदलेगा और क्या? कंप्लीट है क्या? इस बार सोच बदलना पड़ेगा. हाँ? तो तेरा और मेरा हाथ, समझेगी नहीं? ये तो समझना है. आगे चले क्या? तो ये था डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डेंस रेगुलर. अभी यहीं पे हम लोग डेंस इरेगुलर कर लेते हैं. You're actually orientation of arrangement of cells and fibers are irregular. तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होगा कि नहीं? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होगा, फाइबर सेल्स वगैरह, मतलब अनसिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा. एंड बस इसका एक ही एग्जांपल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट? डर्मिस ऑफ स्किन. एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन इसीलिए आता है, मैं आपको लिंक कराता हूं ताकि आप लोग समझे. स्किन 2 पार्ट है, एक है एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस. एपिडर्मिस क्या है? आउटर है कि इनर है? आउटर. डर्मिस क्या है? एंड एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? द एपिथेलियल टिश्यू. याद है? डर्मिस क्या है? कनेक्टिव टिश्यू. Because dermis is dense irregular, that is what ना connective tissue. तो dermis हो गया connective tissue, epidermis हो गया epithelial tissue. तो दोनों का origin भी same होगा कि different होगा? अरे भाई ये epithelial, ये connective है, origin same होगा कि different होगा? Different होगा. And epithelial का 2 अलग अलग origin है. Epidermis is made up of ectoderm, whereas dermis is made up of what? क्योंकि ये connective tissue है तो क्या होगा? हाँ, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से आता है.
And this particular topic is related with what na reproduction also. Reproduction में आप लोग पढ़े हो fate of germ layer, ectodermal origin, mesodermal origin, endodermal origin. ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखो. Have you finished? We are coming to, as per the classification of connective tissue, we have finished what? Dense and loose both, right? अभी बचा क्या है? Specialized connective tissue. Coming to the specialized connective tissue. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इसीलिए मैंने कल आपको बोला था कि ये स्पेशलाइज्ड है तो विच इज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस रेगुलर, सॉरी डेंस, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू. ना स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर क्या पहले आएगा? स्केलेटल या वैस्कुलर? पहले स्टार्ट करते हैं स्केलेटल. What is the criteria for the skeletal tissue? It is actually solid. Solid matrix के fluidy matrix. तो solid with minerals की without minerals. Bone, cartilage, इसमें तो आएगा. Solid and mineralized matrix. इसका मेन फंक्शन क्या है ना? सपोर्ट, एक्शन, लोकोमोशन and endoskeleton. So actually this form the endoskeleton part of your body. They support the different visceral organs. They will protect the different your soft organ of your body, and this helps in the locomotion. That is why these are the 4 different functions related with the skeletal tissue. उसके अंदर हम लोग फर्स्ट आते हैं कौन सा आ जाएगा? कार्टिलेज. अच्छा, कैटिलेज, बोन एंड डेंस. मैंने आपको 3 अलग अलग टिश्यू दिया, कार्टिलेज, बोन एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes or no? Which is softer, which is harder? इसीलिए हम लोग गलत करते हैं भाई. ये मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स है, ये हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? हार्ड होगा. लेकिन बोन से हार्ड होगा कि बोन से सॉफ्ट होगा? लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू से हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? सबसे हार्ड कौन हुआ? सबसे सॉफ्ट कौन हुआ? इतना इजी है देखो, फिर भी आप गलत कर रहे. अब ऐसा क्वेश्चन ही नीट में आता है, मैं 50 बार बोल चुका हूँ. आप अगर हार्ड क्वेश्चंस बनाएंगे जाके घर में, प्रैक्टिस तो अलग चीज का हुआ, ट्रिकी क्वेश्चन तो आप किए नहीं, और एग्जाम में नहीं फंसेंगे तो क्या होगा? एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन आता है, कभी डिफिकल्ट नहीं आता है. देख लीजिए 5 साल का उठा के, क्वेश्चन हमेशा लेंदी रहता है ताकि आपको फंसाए, ताकि आपका ब्रेन का कितना कैपेसिटी है वो जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं. डॉक्टर बनने वाले हो, समझ रहे हो? इसीलिए उसी टाइप के बच्चे को ही सिलेक्ट किया जाएगा. तो एक्चुअली ब्रेन को यूज करें, रट्टा मार के कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा. तो कार्टिलेज मैंने ऑलरेडी क्या बोला, वैस्कुलर की वैस्कुलर,
It is avascular without blood supply. Covered with periosteum की perichondrium. Covered by perichondrium. It is softer than bone and harder than dense. It is softer than bone and harder than dense connective tissue. कार्टिलेज को हम अगर इलास्टिक बोलेंगे तो गलत होगा कि सही होगा? बोलिए. कार्टिलेज इज इलास्टिक इन नेचर. इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा. अरे बोन से सॉफ्ट है तो ऑब्वियसली इलास्टिक होगा. ये सब हम लोग कार्टिलेज तो देखे होंगे जब आप लोग कोई नॉनवेज वगैरह खाते हैं, मटन वगैरह, उसमें व्हाइट कलर का प्लायबल देखा है कि नहीं? व्हाइट कलर का जो पर्ली व्हाइट टाइप का होता है वो क्या है? कार्टिलेज ही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो राइट, it is abundantly found in vertebrate embryo, right please? It is abundantly found in vertebrate embryo. कुछ पॉइंट आप लिखाऊंगा मैं आपको, सब लिखना पॉसिबल नहीं है बोर्ड में. So it is abundantly found in vertebrate embryo which later ossified to form most of bones, which later ossified to form most of bones. You know, bones is of 4 different types. जानते हो? Cartilaginous bone, sesamoid bone, dermal bone, visceral bone. How many? 4 different types. And आपके बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा बोन प्रेजेंट है? Cartilaginous bone. The bone which is modification of what? ना cartilage. यही पॉइंट मैंने लिखाया. जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में बोन नहीं होता है. एम्ब्रियो में सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज होता है. बट आफ्टर दैट the cartilage will be changed into formation of what? Na bone. That is called as ossification. Formation of bone is called as ossification. The ossification of cartilage will form which bone? Cartilaginous bone. इसीलिए मैंने क्या पॉइंट लगाया है? It is abundantly found in the embryo, but it is later ossified to form most of the bones. Next point, it is commonly found in adult vertebrates. It is commonly found in adult vertebrates. So we are the adult vertebrate, and we also have the cartilage, which is very commonly found. So now we are coming to the structure. Under the structure of the cartilage, we will first start about the matrix. The name of the matrix is called as what? Chondromucoid matrix. Name of the matrix is called as chondromucoid matrix, which is actually solid and pliable. और फ्लेक्सिबल और इलास्टिक. इसीलिए मैंने क्लियरली लिखा था कि कार्टिलेज होता है इलास्टिक, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है दैट इज सॉलिड बट प्लायबल और फ्लेक्सिबल और इलास्टिक. एंड ये जो कॉन्ड्रोम्यूकोइड मैट्रिक्स है इसमें 2 पार्ट है. एक है ऑर्गेनिक पार्ट, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? ना कॉन्ड्रीन प्रोटीन. नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन द कार्टिलेज. ना कॉन्ड्रीन. वैसे बोन में क्या है? ओसिन. यहाँ पे कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है? कॉन्ड्रोम्यूकोइड मैट्रिक्स. तो बोन में जो मैट्रिक्स होगा उसका नाम क्या है? ओस्टियोइड मैट्रिक्स. Here it is inorganic part is called as salt part, called as chondroitin sulfate. तो inorganic part मतलब salt part.
So what is the name of the salt present in the chondromucoid matrix of cartilage? The chondroitin sulfate. It is actually a type of modified polysaccharide. आप लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, नाम सुने हो ना? And that mucopolysaccharide, one of the mucopolysaccharide is called as chondroitin sulfate. So it is actually not a pure salt, ये modified है, कार्बोहाइड्रेट का modified है. Now comes to the cell. Cell is called as what? Chondrocyte. Derived from? Yes, chondroblast. Cartilage eater or phagocyte. That is chondroclast. इसलिए यहां से ये chondrocyte, chondroblast and chondroclast. So next point is cartilage cells are present in either single or group of 2 to 4. या तो cartilage cell single present हो सकता है या तो group of 2 to 4 हो सकता है within fluid filled cavity called as what? Lacuna. Lacuna very very important word. क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग तो पढ़े हो, ऐसा नहीं कि 11th नहीं पढ़े हो, पढ़े हो इसलिए आपको याद होगा. व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द बोन एंड cartilage? Lacuna. And what is the dissimilarity or difference between the bone and cartilage? ना canaliculi. नाम सुने हो ना? तो canaliculi is present in the bone cells but absent in the cartilage cell. but दोनों में common क्या है? Lacuna. This is chondrocyte. This is lacuna. This is matrix. ये सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ 2 to 4 हो सकता है. मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया, ये ग्रुप ऑफ 2 है. कंप्लीट. Now comes to the fiber. ये हो गया सेल. Now comes to the fiber. फाइबर तो आप लोग जानते हो दो टाइप का है. वन इज कोलाजन फाइबर, अनदर इज इलास्टिक फाइबर. तो दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, पर डिपेंड करता है कि कौन सा फाइबर ज्यादा है. अगर कोलाजन फाइबर ज्यादा हुआ तो ज्यादा स्ट्रांग होगा ये. अगर इलास्टिक फाइबर ज्यादा हुआ तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा. So now we are coming to the types of cartilage. Number 1, hyaline cartilage. It is actually
ट्रांसलूसेंट, पर्ली व्हाइट, ग्लास लाइक कैटिलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ग्लास लाइक कैटिलेज, हाइलीन, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है बट ट्रांसलूसेंट है, पर्ली व्हाइट, ग्लास लाइक कैटिलेज। इसका लोकेशन, लैरिंक्स, नेजल सेप्टम, ट्रैकियल रिंग्स, ट्रैकियल रिंग्स, कोस्टल कैटिलेज, देखिए एक्चुअली ये रिब्स में प्रेजेंट है, रिब्स में है, रिब्स का जो एंड है ना, एंड ऑफ रिब्स में है, एंड क्योंकि ये रिब के एंड में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई हाइलिन कैटिलेज इज आल्सो कॉल्ड एज कोस्टल कैटिलेज। तो एंड ऑफ रिब्स में है, एंड ऑफ स्टर्नम में है, then it is present in the end of limb bones, लॉन्ग बोन्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, एंड दैट इज व्हाई, देखिए मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, सपोज टू बी दिस इज वन ऑफ द बोन एंड दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द बोन, तो ये दोनों क्या हुआ, लॉन्ग बोन्स हुआ कि नहीं, दोनों ही लॉन्ग बोन्स हुआ, तो लॉन्ग बोन्स के एंड में यहाँ पे ये कैटिलेज प्रेजेंट, and the point of contact between the two bones is called as what, na articulation, बोलते हैं कि नहीं, तो articulation is the point of contact between the two bone or the joint between the two bone is called as what, na articulation, and as it is present in the articulation point between the two long bones, that is why the hyaline cartilage is also called as what, na articular cartilage. It is also present in the head apparatus. And this is also present in what? In the bronchi. The bronchi may be present. So this is actually the location which is the point of question here. Hyaline cartilage का दो question पूछता है, एक तो glass like cartilage, दूसरा है articular cartilage, and third is most important example you need to remember is here. कौन सा? Nasal septum. Larynx, nasal septum, tracheal rings, end of the ribs, end of the sternum, end of the limbs, सबसे important है nasal septum. Number 2. White fibrous cartilage. White fibrous cartilage में आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, with more white fiber, right? तो ये क्या होगा, more elastic की less elastic, मूवेबल की इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल, क्या होगा, और आप लोग इसके साथ जोड़ सकते हैं किसको, न जॉइंट्स को, बड़े है ना, इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, पढ़े हो, immovable is because of presence of what, white fiber present in between the joint. अगर जॉइंट में ओनली व्हाइट फाइबर होगा देन क्या ये जॉइंट मूव करेगा, दैट इज व्हाट इज इमूवेबल.
लेकिन जॉइंट में अगर व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट हो, फ्रेंड्स है दोनों में, व्हाइट फाइबर अलग चीज है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज अलग चीज। अगर व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होगा तो क्या होगा, इसमें व्हाइट फाइबर है बट येलो फाइबर भी है, दैट इज व्हाई इट इज स्लाइटली इलास्टिक। तो स्लाइटली इलास्टिक होगा तो स्लाइटली मूवेबल होगा कि फ्रीली मूवेबल होगा, एंड जो फ्रीली मूवेबल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट लिगामेंट, लिगामेंट की वजह से वो बहुत ही फ्रीली मूवेबल है। पढ़े हो सैनोवियल जॉइंट, सैनोवियल जॉइंट के बीच में क्या होता है, लिगामेंट, याद आया कि नहीं। हर चीज आप अगर लिंक कर देंगे एक दूसरे के साथ बहुत इजी हो जाता है। सो काइंडली इसको मेंटेन करने के लिए कोशिश करिए। सो विथ वाइट, मोर वाइट फाइबर, लेस इलास्टिक एंड स्लाइटली मूवेबल। इसका लोकेशन हो जाएगा इन बिटवीन वर्टिब्रे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या ना, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। पढ़े हो ना, ये जो डिस्क की बात करिए, डिस्क किस चीज से बना है, in between the vertebrae there is a disc like structure is present which makes the vertebrae slightly movable. What is that disc? The white fibrous cartilage, that is why it is called as intervertebral disc in between the vertebrae. तो ये slightly movable है कि freely movable है, and pubic symphysis, pubic symphysis भी थोड़ा बहुत आप जानते हो, in case of female during the maturation of the baby, दो प्यूबिस बोन के बीच में क्या प्रेजेंट है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस। थोड़ा तो नॉलेज होगा भाई, ये जो हिप गर्डल है, हिप गर्डल, पेल्विक गर्डल, ईच पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ टू बोन, राइट में एक बोन है, लेफ्ट में एक बोन है, एंड ईच बोन इज कॉल्ड एज व्हाट ना, कॉक्सल बोन। क्या बोलते हैं उसको, तो हाउ मेनी कॉक्सल बोन इज देयर, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री बोन फ्यूज्ड, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। समझाने के टाइम में फोकस मेरे ऊपर रहेगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, ये दो इलियम, ये दो इस्कियम है, ये दो क्या है, प्यूबिस। दो प्यूबिस बोन के बीच में ये क्या प्रेजेंट है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। एक्चुअली ये प्यूबिक सिम्फाइसिस सॉफ्ट है, स्लाइटली इलास्टिक एज इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो पैर्चुरेशन के टाइम में आप लोग पढ़े होंगे, रिलैक्सिन को भी हम लोग बोलते हैं पैर्चुरेशन हार्मोन और बर्थ हार्मोन, राइट। तो व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस रिलैक्सिन हार्मोन, दिस प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करेगा ना, सॉफ्ट करेगा। सॉफ्ट करने से क्या होगा, स्ट्रेच होगा, एंड द बेबी विल बी पैर्चुरेट। क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करना है, कंफर्म करिए। फर्स्ट क्लास में ही मैंने बोला था, लिखने में कम प्रेफरेंस, समझने में ज्यादा प्रेफरेंस। एक वर्ड है जिसका नाम है न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस is actually soft area present in between vertebrae. It is actually a remnant of notochord.
It is actually thought as what? The remnant of notochord. आप लोग सब जानते हो कि वर्टिब्रल कलम इज एक्चुअली मॉडिफाइड नोटोकॉर्ड, ये सब नो नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड टू फॉर्म वर्टिब्रल कलम। एंड ये वर्टिब्रल कलम अगर कार्टिलेजिनस हुआ तो कार्टिलेज वर्टिब्रे, अगर ये वर्टिब्रे अगर बोनी मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या हो जाएगा ना, बोनी वर्टिब्रल कलम। फॉर एग्जांपल इनके सब सार्क इज आल्सो वर्टिब्रे, लेकिन सार्क क्या है, कार्टिलेजिनस की बोनी, तो उसका वर्टिब्रे क्या होगा, ऑस्टिक्थिस, दैट इज व्हाट ना बोनी वर्टिब्रे। कॉन्ट्रिक्थिस क्या हो गया ना, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रे। साइक्लोस्टोम आप लोग पढ़े हो, साइक्लोस्टम्स दैट इज व्हाट ना मिक्सिन, पेट्रोमाइजन, ये सब क्या है, बोनी है कि कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेजिनस। इसके केस में भी वर्टिब्रल कलम, बट कार्टिलेज एज पर एनसीईआरटी, आपको पता है शायद आप लोग ये वर्ड लाइन पढ़े हो कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग listed organism has the notochord present and persist throughout life? Which of the following chordate, which of the following chordate, chordate मतलब क्या है, with vertical column की without, with notochord, with notochord is called as what, chordate, may be present throughout life or may be present any part of the life cycle, then it is called as what, the chordate। जैसे हम लोग क्या है ना, हमारे केसेस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज बट दैट चेंज इनटू वर्टिब्रल कलम, तो लाइफ के किसी पार्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो था, वी आर कॉर्डेट, सो वी आर व्हाट ना, कॉर्डेट वर्टिब्रेट। जिनके केस में सिर्फ कॉर्डेट नोटोकॉर्ड होता है, नो वर्टिब्रल कलम, दे आर कॉल्ड एज व्हाट ना, कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट। मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट्स has the notochord present and persist throughout the life? लास्ट लाइन, दिक्कत है, क्या हो रहा है, स्ट्रेन पड़ रहा है, तो बाहर जाइए, थोड़ा सा आंखों पे मरहम लगा के आइए, तो आगे बैठो ना, कौन मना किया भाई तुमको, तीन तीन बैठे यहाँ पे और एक सीट खाली है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बैठो, तुम जाके पीछे बैठ जाओगे, बैक बेंचर होगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एनीबडी एल्स एनसीईआरटी पढ़े हो तो साइड दे दो भाई उसको, आंखों पे थोड़ा सा उसका मरहम लग जाएगा बैठ के आगे। हाँ गुड, एनसीईआरटी पढ़े हो, आई डोंट थिंक सो, वो तो बोल दिया, और क्या है, इसलिए एनसीईआरटी को अपना फ्रेंड बनाइए, बेस्ट फ्रेंड बनाइए, सबसे बेस्ट फ्रेंड एनसीईआरटी। क्लियरली लिखा है साइक्लोस्टोम में प्रेजेंट एंड परसिस्ट थ्रू आउट, लेकिन हमने साइक्लोस्टोम को इग्नोर किया है। पढ़ा क्या है आपने जो बोला, सेफालोकॉर्डेट, दैट राइट, कि सेफालोकॉर्डेट के केसेस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, और क्या है, साइक्लोस्टोम्स। तो साइक्लोस्टोम्स एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं वर्टिब्रेट के अंदर, बट वहां पे भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है पार्शियली, मतलब वहां पे वर्टिब्रल कलम भी है, नोटोकॉर्ड भी 100% मॉडिफाई नहीं हुआ है, पार्शियली मॉडिफाई हुआ है, दैट इज व्हाई देयर आल्सो द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। तो कौन कौन हो गया, एक तो हो गया सेफालोकॉर्डेट, दूसरा हो गया साइक्लोस्टोम्स। बाकी यूरोकॉर्डेट पे क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज, दैट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू द टेल पार्ट, याद है कि नहीं, दैट इज बाय यूरोकॉर्डेटा, एब्सेंट इन द एडल्ट। लेकिन बाकी जो बच गए उसमें क्या है ना, एम्ब्रायोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, एडल्ट में एब्सेंट होता है, एडल्ट में वर्टिब्रल कलम, and during the modification of this notochord into vertebrae, some part of the your notochord being remained present in between the vertebrae called as what, nucleus pulposus, ठीक है। Now number 3, yellow elastic cartilage, with more yellow fiber,
ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा कि नहीं? And it is present in Eustachian tube. Ear pinna, tip of nose. आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछेगा कि नेजल सेप्टम is made up of which cartilage and tip of nose is made up of which cartilage. हम लोग को पता है कि सेप्टम क्या है, टिप ऑफ नोज क्या है. ये देखिए नेजल सेप्टम बीच में जो हो गया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नेजल सेप्टम. एंड बाकी टिप आप लोग जानते हैं विच इज एक्चुअली मोर सॉफ्ट एंड विच इज स्लाइटली मोर हार्ड. टिप ऑफ नोज क्या है? फ्लेक्सिबल है कि नहीं? pliable है कि नहीं? That is made up of what? ना elastic. But nasal septum is made up of what? ना hyaline. इसीलिए मैंने आपको point out कर दिया कहाँ से question आएगा. Number 4. Calcified cartilage. Here in addition to the everything present in the matrix, calcium salt present in matrix. Matrix बहुत ज्यादा hard होगा कि नहीं? That is why the matrix is a very hard matrix. So harder matrix is because of the presence of the calcium salt. तो यहाँ पे ये जो calcified cartilage होगा ना, ये bone जैसे hard हो जाता है because of the presence of what ना, calcium salt. And इसका example हम दे सकते हैं sharp vertebrae. Sharp का जो vertebrae है, vertebral column that is very strong as just like your what ना bone. The sharp vertebrae is made up of calcified cartilage. Remember, this calcified cartilage is absent in case of human being. Human being में ये absent होता है. किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए. The last line जो आप याद रख सकते हैं. Growth of cartilage यूनिडायरेक्शनल होगा कि बाई डायरेक्शनल होगा? आउटसाइड ग्रोथ की इनसाइड ग्रोथ क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल मतलब आइदर इनसाइड होगा या तो आउटसाइड होगा. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है बच्चों को. ये लोग सोचते हैं कि भाई यूनिडायरेक्शन मतलब एक सिंगल डायरेक्शन रखो, राइट? दैट इज इन द सिंगल डायरेक्शन, बट विच डायरेक्शन? ये लेंथ में इंक्रीज नहीं करता है. हम यहाँ पे ब्रेथ में इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, थिकनेस इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, नॉट द लेंथ इंक्रीज. तो थिकनेस जो इंक्रीज करता है, इनसाइड थिकनेस भी इंक्रीज करेगा, आउटसाइड भी इंक्रीज कर सकता है. अगर दोनों साइड भी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? बाई डायरेक्शनल. अगर सिर्फ आउटसाइड हुआ, नो इनसाइड, देन इट इज ओनली आउटसाइड. बट बोन नहीं हो जाएगा बाई डायरेक्शनल, बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड. सो आई होप आप लोगों को कैटलिस्ट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा. यस और नो? यस. गुड. लेट्स हैव ए ड्रिंक. फिर आप लोग भी पी लीजिए. मजा आ रहा है कि नहीं? अरे मजा आ रहा है कि नहीं बोलिए ना. हाँ सर, 3 क्लास में कैसे मजा आ सकता है?
So coming to the next topic, bone. Initially very strong, very hard, non-pliable matrix. कंपोजिशन की बात करें, matrix is called as steered matrix. That matrix contains 70% inorganic and only 30% organic. इनऑर्गेनिक में क्या आता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, एटसेट्रा. ऐसा देखा जाएगा तो 8 different type of inorganic salts are present. The most abundant inorganic salt which is present in the bone is calcium phosphate and calcium carbonate. भी ऐड कर दीजिए. अगर हम लोग ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक के अंडर आ जाएगा ओसिन प्रोटीन एंड कोलाजन फाइबर. So this is actually the composition of the matrix. ओस्टियोइड मैट्रिक्स, ओसिन प्रोटीन है, कोलाजन फाइबर है, तो ये बहुत ही हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा. एंड आप देख सकते हैं कैल्शियम इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, वेरी हार्ड, नॉन प्लायबल मैट्रिक्स. ना दोस्तों द सेल. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज आप लिख सकते हैं कि अगर हम लोग बोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ट्रीट करेंगे तो क्या होगा ना, क्या हो जाएगा? डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा. एंड दैट कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन होगा कि कैल्सिफिकेशन होगा? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीकैल्सिफाइड बोन. बोन बिकम डीकैल्सिफाइड. एंड अगर हम लोग बोन को नॉर्मली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ट्रीट करते हैं, देयर विल बी नो चेंज और न्यूट्रल इन बोन. हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसी टॉपिक में कि बोन का बहुत सारा वैरायटी है. ड्राइड बोन है, डिकैल्सिफाइड बोन है. तो डिकैल्सिफाइड बोन विल बी फॉर्म व्हेन द बोन इज ट्रीटेड विद व्हाट? ना डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Now what is the name of the cell? We are coming to the cell. Cell का नाम क्या था? Osteocyte. Derived from osteoblast. Bone eater, osteoclast. Same, you need to remember osteocyte, osteoblast, and osteoclast. Osteocyte present single, ये कोई ग्रुप में नहीं होता, ये सिंगल होता है within lacuna
एंड जैसे कि मैंने बोला branched lacuna is called what? Canaliculi. Branched lacuna is called as canaliculi, so we will get the questions from the canaliculi point. So let's see the diagram of this. Here it is. To your side. This is lacuna and this is canaliculi. The growth of bone is bidirectional. That is both outside and inside. दोनों साइड का ग्रोथ होता है बाइडायरेक्शनल ग्रोथ. एंड फाइबर में ऑलरेडी बोल चुका हूं कौन सा फाइबर होता है यहाँ पे कोलाजन फाइबर. एंड हियर collagen fibers are typically named as surface fiber. Collagen fibers are white fibers which is present here in case of bone. ये शार्प का मतलब क्या होता है बहुत धारेदार को हम लोग शार्प बोलते हैं कि नहीं एड्स होगा उसमें बहुत ज्यादा. तो यहाँ पे इसको शार्पेस्ट फाइबर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये शार्प पेनेट्रेट किया है बहुत ही हाईली पेनेट्रेट किया है अंदर की तरफ. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज शार्पेस्ट फाइबर. आई विल शो इन द डायग्राम. इसमें कोई डाउट है तो बोलिए. नहीं लोग को कुछ डाउट वाउट नहीं निकलता है क्या. अरे निकलता है नहीं निकलता है. अरे ये बहुत खराब चीज है कि आपका डाउट नहीं निकलता. अच्छी चीज नहीं है. जल्दी जल्दी डाउट्स निकालिए और आफ्टर द क्लास आपका 2:15 2:30 तक हम लोग रेडी हो जाते हैं डाउट के लिए. आप लोग भी लंच पंच कर लीजिए 2:30 में जितना जिसका भी डाउट होगा जितना हो सके आप डाउट में पूछिए. आपके लिए अच्छा है हमारे लिए भी अच्छा. वी आर कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए लॉन्ग मूव. This is actually a structure of a long bone. Here, this is the head and this is the end. Head
is called as epiphysis. End is also called as epiphysis. In between the head and end, this is called as shaft or diaphysis. तो epiphysis के बीच में क्या है? Diaphysis और shaft. जैसे कि हम लोग डिस्कशन किए थे, the covering of the bone is covered by periosteum. ये आउटर कवरिंग है कि इनर कवरिंग है? वैसे ही एक इनर कवरिंग है जिसका नाम है एंडोस्टियम. राइट, ये हो गया पेरियोस्टियम एंड दिस वन इज एंडोस्टियम. देयर इज ए बोन मैरो कैविटी. Bone marrow cavity with which bone marrow? Na yellow bone marrow. Here the bone marrow cavity with yellow bone marrow. अगर bone की बात करें, this is called as what? ना compact bone. मैं आपको बताऊंगा. धीरे धीरे compact and spongy का difference हम बताएंगे. This is actually spongy bone. And the spongy bone is here with many irregular bony plate called as what? The trabeculae. The trabeculae actually क्या है ना? Bony plate. So irregular bony plate are present. तो ट्रेविकुला को कहाँ पे दिख रहा है? स्पॉन्जी बोन में कि कॉम्पैक्ट बोन में? So this trabeculae, in between the trabeculae, there is a bone marrow called as what? Na red bone marrow. अब आपको सीधा सीधा आंसर है कि येलो बोन मैरो प्रेजेंट इन द डायफाइसिस और एपिफाइसिस. रेड बोन मैरो प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो प्रेजेंट इन विच बोन? स्पॉन्जी की कॉम्पैक्ट? कॉम्पैक्ट बोन में क्या है? बोन मैरो कैविटी इज एब्सेंट इन स्पॉन्जी बोन की कॉम्पैक्ट बोन. बोन मैरो कैविटी इज एब्सेंट इन स्पॉन्जी, प्रेजेंट इन कॉम्पैक्ट. एंड विच बोन मैरो कैविटी इज विथ व्हाट? ना येलो बोन मैरो. इस डायग्राम में ही काफी सारा क्वेश्चन. Compact bone present in the diaphysis part. Spongy bone is present in the epiphysis part. ठीक है, तो एपिफाइसिस में जो बोन का है, इस बोन का नाम क्या है? स्पॉन्जी बोन. एंड कॉम्पैक्ट पार्ट, सो डायफाइसिस में जो बोन प्रेजेंट उसका नाम क्या है? कॉम्पैक्ट. दैट्स इट. समझ में आ गया? चले नेक्स्ट में हम लोग नीचे. यस और नो? गुड. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे सीधा कॉम्पैक्ट बोन को ऐसे क्रॉस सेक्शन कर लेंगे. इसका कॉम्पैक्ट की स्पॉन्जी. हमने यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन किसका लिया? कॉम्पैक्ट बोन. You will see like this. बहुत ही सीधा ऐसे दिखेगा कि नहीं? This one is called as what? Periosteum. This is called as what? Endosteum. This one is called as what? Bone marrow cavity with what? Yellow bone marrow. This is actually transverse section, TS of compact. अब हम क्या कर रहे हैं? मैं इस कॉम्पैक्ट बोन का एक छोटा सा पार्ट हम देखेंगे. कौन सा पार्ट? में ये भी मैं शो कर देता हूँ कौन सा पार्ट हम देखने वाले हैं. Here, if we'll go for the
ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, एवरीबॉडी सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसवर्स बोन, कॉम्पैक्ट बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं, यू विल सी नंबर्स ऑफ कैनल लाइक दिस, and this canal is called as what? Haversian canal। क्या उसका नाम? तो Haversian canal longitudinal है कि ट्रांसवर्स है? दिख रहा है आपको? ऐसे ऐसे होगा बहुत सारा। तो ये कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल कैनल। दो लॉन्गिट्यूडनल कैनल को जो कनेक्ट करेगा वो कौन सा कैनल होगा? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना? वोल्कमैन्स कैनल। तो इसीलिए वोल्कमैन्स कैनल क्या है? ट्रांसवर्स। Haversian canal क्या है? Longitudinal। And this Haversian canal is only found in compact bone, not in spongy। हमने किसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है? कॉम्पैक्ट का। मतलब डायफाइसिस या एपिफाइसिस? यस, मैंने यहाँ पे डायफाइसिस को ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। दैट इज व्हाई इट इज द पार्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन व्हिच शोज द Haversian canal। अभी हम इसको एलाबोरेट करके देखें। एक पार्ट ऑफ द डायग्राम लेबलिंग करने के लिए कर रहा हूँ। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि these are osteocyte cells। Osteocyte cells, as because they have the branches of the lacuna called as what? Canaliculi। And canaliculi से फायदा क्या है? What is the significance here presence of the canaliculi which is absent in case of cartilage? Anybody? कैनेलिकुली से एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं? हाँ। Adjacent osteocytes will communicate with the canaliculi to form a very network-like structure। इसीलिए क्या होगा ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हो जाता है बिकॉज ऑफ दी व्हाट ना अरेंजमेंट, जस्ट लाइक योर स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसके वजह से अरेंजमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। This is Haversian canal and which is already told longitudinal है ये। This is what? Periosteum। This is what? Endosteum। ये क्या है? बोन मैरो कैविटी है।
फॉर अ मिनट एवरीबॉडी सी हियर, टाइम तो हो चुका है, बस 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम को देखिए, लेफ्ट वाला डायग्राम। Here I have just arranged. Here I have just arranged the what na arrangement of matrix. Matrix present in the layer. Matrix present in the layer is called as what na lamellae. What is the meaning of lamellae? Layer of matrix. Matrix का जो arrangement है layer by layer, that is called as what na lamellae. And in between the lamellae, there is what na lacuna. In between the lamellae, there is presence of what? Lacuna. Lacuna contains what? Osteocyte. पढ़े थे हम लोग कि osteocytes are present within the fluid filled cavity called as what? The lacuna. And lacuna का branches को हम लोग क्या बोलेंगे? With what? Canalicle. अरे समझे कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला डायग्राम मैंने किया है, इसमें भी आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये सब क्या है? ये क्या है? लैमेली है कि लैक्यूना है? ये क्या है? लैमेली। And in between the lamellae, this is called as what? Lacuna. ये डायग्राम में आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो वाला कर दिया कि ताकि समझे कि लैक्यूना क्या है, लैमेली क्या है, ओस्टियोसाइट का लोकेशन कहाँ पे। लैक्यूना विथ कैनल। And this system is called as what? A Haversian system. क्या बोलते हैं इसको? And in between these two Haversian canal, this canal is called as what? Volkmann's canal. जो कि ट्रांसवर्स होता है। एंड थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पेरियोस्टियम क्या है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है कि येलो इलास्टिक कार्टिलेज है? पेरियोस्टियम। अभी हम लोग क्या बात किए थे? पेरियोस्टियम सिथ कनेक्टिव टिश्यू है ना, एंड सिथ क्या है? व्हाइट फाइब्रस, मतलब व्हाइट फाइबर प्रेजेंट और एब्सेंट? व्हाइट फाइबर प्रेजेंट है, तो वहां पे पेरियोस्टियम का जो व्हाइट फाइबर है ना, ये ऐसे व्हाइट फाइबर क्या हुआ है ना, शार्पली पेनेट्रेट हुआ है ऐसे। That is why it is called as what? Surface fiber. तो सरफेस फाइबर एक्चुअली क्या है? व्हाइट फाइबर है कि नहीं? सरफेस फाइबर एक्चुअली इज द फाइबर ऑफ पेरियोस्टियम, व्हाइट फाइबर ऑफ पेरियोस्टियम जो पेनिट्रेट किया है। पेरियोस्टियम तो व्हाइट फाइबर है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। क्लियर है? So this is the transverse section of the compact bone showing the Haversian system as a your what? The characteristic feature, याद रखिए, Haversian system, the characteristic feature of mammals only. Mammalian compact bone. किसी और में ये Haversian system नहीं है, सिर्फ मैमल का होता है, वो भी कॉम्पैक्ट बोन में होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोन्स के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।